let's break down dancing. वो बड़ा गुनाह है डांसिंग, ये वो व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग, मैं अपने आप को हिला रहा हूँ, ओह शिट मैंने अपने आप को हिलाया, दुनिया तबाह हो गई. नहीं, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल. पीपल आर जस्ट एंजॉयिंग देमसेल्व्स. उनको छोड़ दो, उनके पास कुछ है ही नहीं, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ केयर है, ना सिक्योरिटी है, ना रोडें, फुटपाथ कुछ नहीं है. वी डोंट हैव एनीथिंग इन दिस कंट्री. अब और क्या करें, नस काटते हैं अपनी. बिजली के बिल देने जाओ, ऐसा का क्या हाल है. हाँ, अगर एसी आप चलाते हो तो 100 के तो आपका बिल आ जाएगा इजीली. हर 14 अगस्त को ये रूटीन बन गई है. हरासमेंट के केसेस होंगे, खवातीन जो है 14 अगस्त को बाहर नहीं निकल सकती. It's so sad. It breaks my fucking heart that you have a people. छोटे से रंग देख लेते हैं ना लोग, खड़े होके बस देख रहे होते हैं कि ओके क्या दुबई में they don't have anti-narcotics or they don't have police serving. Crazy. ये तरीका थोड़ी होता है कि बाहर जो है कोई भी क्लब हो, सोहो गार्डन के बाहर इस तरह थोड़ी होता है. पुलिस पड़ती है जी, चेकिंग कराएं, अच्छा गाड़ियों से निकलें, ये वो जूते मोजे. This is insulting. This is against human dignity. आपको अपना काम नहीं करना आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि you can start disrespecting people. क्योंकि उनका तो वही आइडिया यही होता है कि बस ये जो बच्चे हैं इनके पास कुछ मिल जाएगा और हमारी दिहाड़ी लग जाएगी. आपके काम में तो लोग गालियां दे रहे हैं आपको और बोल रहे हैं कि यार ये इदारे खराब है, निकलो इस मुल्क से, जलील करते हैं ये वो. You can't treat people like dog shit. Hello everyone, welcome to another episode of Upclose. I'm Ahmed Randhawa and today we have Hamza Haris with us. Sir, कैसे आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए. Nobody knows me by that name though. हाँ, exactly. Shotbox. Yes. So firstly, Shotbox कैसे? Shotbox, the name or the company were both. I don't come up with the name at all. Okay. Basically, a couple of my friends went, the north. They're having their little thing. I mean, okay. So Hotbox है shorts and Shotbox. You can, that's the gist of the story. अच्छा, ये इधर से आया, बस वो अपना वो मस्ती में थे कहीं. Then we threw a party and then it was called Shotbox and then Shotbox just stuck. बस ऐसे randomly. Hotbox से. There's no science behind it. Yeah, there's nothing, no thought behind it. It's just a bunch of kids having fun. अब वो सारे बड़े हो गए हम लोग. So legacy में बस पहुंच गए. और वो एक नाम बस रह गया. Yes. Good यार. मैंने बल्कि आपका आने से पहले बैकग्राउंड चेक जो कर रहा था Instagram पे, तो मैंने देखा, मैंने कहा चेक करूं कि स्टोरी क्या है, क्या हिसाब किताब है. So you identify as a DJ, right? Yes. Okay. I mean, I'm a lot of things. I'm making music, I'm DJing, I'm putting up events. Okay. I mean, I'm an artist. That's what I do. I just want to do pretty stuff. I just want to curate really amazing things, and that's all I can define it. If you go to a Shotbox show, I think I can say this with a lot of confidence that it is one of the most craziest things that happen in this country. Okay. And that's what we're trying to create. It's a, apart from anything else, if you were to ask me how do I define Shotbox, what exactly is it? It's an experience where you can be a kid again. That's what I'm trying to show people. Yeah, we can have really crazy things in this country as well. It's not just dirt. That's it. Good yaar, very very nice. ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि I think पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के उस तरह से मौके ही नहीं है. मेजॉरिटी लोगों को आप देखें कि क्या होता है, बस तैयार होके किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, खाना खा लें. वो भी बुकिंग्स नहीं मिल रही मुझे. I don't understand what kind of economic crisis this कि बुकिंग्स नहीं है रेस्टोरेंट. बुकिंग्स नहीं है. हाँ, I swear आप कराची में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, कुलाची वगैरह कहीं, आपको घंटे का वेट होता है. वीकेंड्स के ऊपर तो इट्स क्रेजी. यस सर, असल में प्रॉब्लम ये है कि बल्कि एक स्टोरी वो मैं अभी बात कर रहे थे कि पॉडकास्टर्स खुद बहुत ज्यादा बोलना शुरू करते हैं, बट एक छोटी सी एनेक्डोट. सर, ये कुछ साल पहले की बात है कि ईद के ऊपर लाहौर जू में जो फुटफॉल था वो था, एंड इट वाज 42 डिग्रीज दैट डे. 42 डिग्रीज के अंदर 5 लाख बंदा लाहौर जू के दिन में, क्योंकि 5 लाख बंदा और लाहौर की टोटल आबादी 1.5 करोड़ है. सोचे 5 लाख बंदा जू गया है और जू बंद हो जाता है मगरिब के टाइम. कितनी परसेंट होगी ये 5 लाख? दैट इज 5%. अगर 1 करोड़ आबादी 3% समथिंग, आई डोंट नो, माय मैथ इज इन दैट वेल, बट 1.5 करोड़ में से ये इधर आ गए. एग्जैक्टली. इंसेन. दैट इज इंसेन. और आप सोचें कि ये तो 1.5 करोड़ तो टोटल आबादी है. उसमें से कितने लोग तो लाहौर के हैं ही नहीं, गाँव वगैरह के हैं, वो अपने चले गए वापस. लोगों के पास सर कहीं जाने को नहीं. ईद पे कहाँ जाए? चिड़ियाघर चलते हैं इतनी गर्मी में, क्योंकि वही मजा तो आता है. है तो अच्छा, लेकिन सर देखें आप 42 डिग्रीज में, वही वाली बात आपके पास मौके नहीं एंटरटेनमेंट के. And they don't understand this. That's very necessary. You know,
I was speaking about this on the last podcast कि रोम लड़ रहा था Germanic tribes के साथ और वो सबके गले काट रहे हैं और ये हो रहा है और you know it's hell on earth. Like and it's one of the greatest civilizations as well, one of the greatest countries or the greatest empires. The best thing about Rome and the thing that we remember about Rome is the circuses, right? It's the gladiators, it's the colosseums, ये सारी चीजें. मुझे तो नहीं पता कि नीरो ने क्या किया था. Exactly. चलो सीजर ने ये कर लिया, ब्रूटस की फलानी ये चीज़ आ गई, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज ऑल अबाउट द आर्ट एंड द गेम्स दैट वर हैपनिंग. एंटरटेनमेंट थी, उनको पता था कि अगर इनको एंटरटेनमेंट नहीं देंगे ना ये उठा के मैं फेंक देंगे. और अभी हमारे यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जस्ट गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट, दे विल बी हैप्पी, दे विल स्टे शट, बट गिव देम समथिंग. वरना ये पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे. आई स्वेयर. ओके, सो हमजा किस तरह डीजेइंग और ये म्यूजिक, how did it start? I have no background in this, absolutely no background. People think that I was very musically inclined or something. मुझे कुछ पता ही नहीं था until I went to college. I had no idea about electronic music, and उसके बाद फिर you know मतलब I got into it, and even then I wasn't into it. It was all about you know putting up cool stuff. I was always into exhibitions, right? I want to create crazy stuff. I want to create these shows, and I want to you know have good music with it as well because it was glamorous. It was fun. If I go to an art gallery में तस्वीर देखूंगा, I love you know art galleries. I love museums. That's what I do. If I'm traveling, I'll go to museums and have food. That's how I travel. I love that. But at the same time, imagine if you can have art and music as well, right? Because I said this the last time and I love saying this. Art is how you decorate space. Music is how you decorate time. So you're basically playing with space time and बहुत सारे लोगों को तो time dilation भी होती है raves पे. फिर वो सिर्फ म्यूजिक की वजह से ही होती है या कोई और चीज भी? कोई और चीज भी एक्सपीरियंस आपका जो है सही है. I became a DJ because when there isn't an industry, right? जब industry नहीं होती तो बहुत सारे लोग you know आपस में टकरा रहे होते हैं. They're trying to make you know space for themselves and it's not professional enough. And I kind of got tired of a lot of DJs. इतनी मिनते तड़ले ये वो you know slots के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही and everything. So I was like you know what, screw it, मैं खुद ही कर लूँगा. And I just went to YouTube. I'm like how to DJ and the rest is history. Yeah. That's how you started. Yeah, that's शौक था और आपने बस. हाँ, मेरे पास कंट्रोलर भी नहीं था. I had a friend साथ. I was like man मुझे अपना कंट्रोलर दे दो. I just started practicing and the rest is history. अब तो गुड यार. और लाइक ऑब्वियसली लाइक एनी अदर क्राफ्ट पूरा ये सीखना इसकी एक पूरी होगी. सीखने का एक पूरा प्रोसेस होगा, जर्नी होगी. DJing is a lot like video gaming. Like there's so many buttons and there's so many combinations that you can have. So you can literally learn how to DJ within a day or two. अच्छा. It's that वही है ना कि DSLR सबने ले लिया था, बटन दबाने से फोटो आ रही थी. But it's all about like when you're taking a photo, when you do, you know, I'm also a photographer just by the वो काम छोड़ दिया था मैंने because it's really hard. It was really hard, you know. I was a landscape photographer, तो travel करके पता नहीं ऊपर जाओ ये वो. When you're taking photos, right? It's how you see the moment. It's how you are interacting with the moment that's important for a photographer. Like you know, Magnum की जो series थी, Fidel Castro की, you know. बहुत सारी photos हैं. Yeah, there is this photo of an Alama that's like coming out of the car. Yeah, so these are iconic pictures that it's the moment that you're capturing. You know, it depends on the person. Same with DJing. It depends on the person, how their musical interest is, what they're trying to show through it. बिल्कुल सही. तो ये सारी चीजें हैं. It has a lot to do with practice. You can learn how to be a DJ in one day, but to be a good DJ, it takes a lifetime. Practice से बेहतर. हाँ, like all forms of art. Beat music or acting, कुछ भी वो आप कर के बेहतर होता है. If you ask me how was I as a DJ 1 year ago, I say shit. You ask me how I was like 2 years ago, I'd say shit. You ask me how I was like 3 months ago, I'll say shit. It's like imposter syndrome aside, but you know, it's like things start unlocking in your brain. You know, if you start practicing something, your neurons start forming in that way. Right? New pathways. तो अभी sometimes when I'm DJing, अचानक से there's an epiphany. मुझे समझ नहीं आ रहा होता, but I'm standing there and oh, I can do this. अच्छा, बेहतर हो गया mix. Good यार. Yeah. Like, so उसी moment के अंदर आप improvise कर रहे हैं, नई चीजें बना रहे हो. DJing is all in. अच्छा, so the fun thing about DJing is that somebody new if they come and they play the text, they'll have an anxiety attack. Second by second in front of an audience, you can't make mistakes in that. You make mistakes and that's normal because it's live performances. Sometimes it happens, but you can't make mistakes. So
जब आप एक फ्लो में आ जाते हो, when you're trained as a DJ, then it's very fun because you know what you're doing, you know किस तरीके से आ रहा है, और पूरी ऑडियंस को आप अपने म्यूजिक से कंट्रोल कर रहे हैं. Yeah, it's a live thing. Yeah. हाँ, गुड यार, नाइस. तो सर कैसा सीन है पाकिस्तान में डीजेइंग का और इस सब का? कोई सीन था ही नहीं. पहले तो गंदगी मानी जाती थी, डांस पार्टियां होती थी, हाँ, कंजर खाना, कंजर नशई, ये पता नहीं क्या क्या होता था. फिर हम लोग आए, हमने कहा कि देखें ये आपके दिमाग में जो गलाजत भरी हुई है ना, आप उसको 2 मिनट के लिए पॉज कर लें एंड देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है. How exactly is electronic music becoming the main genre in the world? That's the mainstream genre. Yeah, it's all electronic now. Hip hop, rap, they're there. But 2000s, 2010s के genres, and now it's electronic. That's what's coming in, and we see. If you were gonna ask me what struggles I've had, right? And there's none. कोई स्ट्रगल नहीं रही. Because I am a vocal person, right? अगर मैं कर रहा हूँ, मैं गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ. मुझे आप एक बात बताएं, I am having music, right? I'm there for that. People are coming, they're enjoying music. क्या आप ये चीज़ें दूसरी फॉर्म में आप कहीं और नहीं करते? क्या आप शादियों पे डांस नहीं करते? क्या सीवीयू पे सब वतन नहीं कर रहे होते? जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो बस मसला यही है ना कि आपने बोला हुआ है कि नहीं ये अंग्रेज कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते. हाँ. तो भाई आप आईफोन चलाना छोड़ दें, आप व्हाट्सएप यूज़ करना छोड़ दें, आप इंस्टाग्राम यूज़ करना छोड़ दें, आप गाड़ियाँ चलाना छोड़ दें, आप अपने सारे सीरियल्स, जितने भी किड चॉकलेट्स, जितनी भी चीज़ें बनती है प्रोड्यूस होती है वो छोड़ दें, आप सब छोड़ दें. लिटरली अगर हम वही गैर पाकिस्तानी या गैर मजहबी पे आ जाएं तो फिर तो कुछ भी हमारा नहीं है. There is nothing wrong with it. If people are enjoying themselves in a responsible way, they're having fun, है किसी का कुछ बुरा थोड़ी हो रहा है. हाँ. और जो लोग बोल रहे होते हैं कि ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये हम we were talking about this idea, right? कि and I told you this कि बहुत सारे लोग, एक तो ये लोग हैं सारे जो बाहर चले आते हैं पाकिस्तान से, ठीक है. It's always the people who are fighting with us are all people who've left Pakistan. वो कहीं और आकर रह रहे हैं, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ है कि मैं तो इनसे इंफीरियर हूँ इन गोरों से, मुझे समझ नहीं आ रहा. And they go into that incel mindset, right? Yeah. And it is a crisis with men. Most men have gotten into that incel, they're a part of that incel crisis. They've become incels. Now, if these same men go to our scenes or if they go to these parties, then it's good. They're having fun. But because they can't come to it, then वो इस्लाम को भी लेकर आ जाएंगे, वो आपके कल्चर को भी लेकर आ जाएंगे, आपकी सकाफत को भी लेकर आ जाएंगे. It's hypocritical because they feel insecure that they can't be a part of this, and they know that because they're not part of this, they feel like they're inferior in terms of the resources that they have. They don't have enough resources. They don't have enough say. They don't have enough, social, economic, any political say. They don't have those resources to be a part of this, and I understand that. We want to take frustration कहाँ से आ रही है? We want to take Shotbox mass, and I want a space for these people as well. I want them to be a part of this ताकि their incel behavior cools down and they, because यही लोग अगर events पे आना start होंगे ना, फिर ये सारी बातें नहीं करते, फिर नहीं करेंगे. But at the same time they also need to understand कि अपने आप self awareness का थोड़ा मसला है इस मुल्क में. But if you keep acting like that, I can't open it to the masses because I always have a fear कि यार थोड़ा सेफ्टी का इशू हो सकता है ना. आप किस मुंह से मुझे कोई बोल सकता है कि ओपन इट फॉर द मासेस, बिकॉज आपके मुल्क में इतने मसले हैं, इतनी टेररिज्म है, इतने सेफ्टी इशूज हैं, ब्लास्फेमी में लोग मारे जाते हैं, 10 चीज़ हो सकती है. तो जब आप इस तरह एक्ट करोगे तो हम आपको इस तरह नहीं लेके आ सकते हैं इस फोल्ड में. वो तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि देखिए सर वहाँ पर आपके फिर हरासमेंट, ख़वातीन सेफ नहीं फील करती हैं ऐसी जगहों के ऊपर अगर आप इस तरह एकदम से सबके लिए खोल देंगे. जबकि आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि आप if you open it up to them and let them see कि यार हम किसी का बुरा नहीं कर रहे. और ये सर अभी तो म्यूजिक और डीजेइंग, they'll enjoy it. They will enjoy it. सर आप ये देखें कितनी म्यूजिक इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो सोशल मीडिया पे होती हैं जिसमें ये उर्स हो रहे हैं और पागलों की तरह नाच रहे हैं. फंडामेंटल सी चीज है डांसिंग. आप छोटे बच्चे 6 महीने के बच्चे के सामने आप म्यूजिक चला दो, वो हिलना शुरू कर देगा, उसके साथ सर हिलाना शुरू कर देगा. It's innate, I feel. You connect with people, yeah. You start to trust people who you are dancing with. It's a very human function. Okay, let's break down dancing. क्या वो बड़ा गुनाह है डांसिंग, ये वो. What exactly am I doing? मैं अपने आप को हिला रहा हूँ. Oh shit, मैंने अपने आप को हिलाया, दुनिया तबाह हो गई. नहीं, it's completely normal. मतलब if I get up and I start like moving my hand like इस तरीके से, तो कोई मर गया? नहीं, किसका बुरा हुआ है? Yeah, people are just enjoying themselves. उनको छोड़ दो, उनके पास कुछ है ही नहीं. ना एजुकेशन है, ना हेल्थ केयर है, ना सिक्योरिटी है, ना रोडें, फुटपाथ कुछ नहीं है.
Restaurants are booked as well. We don't have anything in this country. अब और क्या करें, नस काट दें अपनी. क्या करें वाकई में ऐसे इतने मसले आ गए. बिजली के बिल देने जाओ ऐसा का क्या हाल है. हाँ अगर एसी आप चलाते हैं तो 100 के तो आपका बिल आ जाएगा easily. Yeah, it's very hard living in this country. People need to have that empathy. And also I feel कि आप it's very therapeutic. आप करते हैं कितना आपका वो स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आप एक रिफ्रेश्ड फील करते हैं आप. What's better for this country that they have a space to let out some steam, या उसको बंद करके रखें और उसको फिर क्या करें, बच्चों के साथ तशद्दुद होंगे, औरतों के साथ तशद्दुद होंगे, वही एक्सट्रीमिज्म फीड हो रही होगी उनको. ठीक है, there's so much evil in the society that you need to take that step. हाँ वो फ्रस्ट्रेशन का मसला बहुत ज्यादा है. आप देखिए सर बाहर सड़क के ऊपर रोड रेज मारने को तैयार होते हैं. नहीं होता है, लेकिन आई थिंक क्योंकि सर आपके पास जब वो इतनी पेंट अप एनर्जी है और उसको निकालने का कोई आउटलेट ही नहीं है, तो लोगों का फिर क्या हाल होगा. आप देखिए 14 अगस्त पे मुल्क में क्या होता है, लोग हर 14 अगस्त को ये रूटीन बन गई है, हरासमेंट के केसेस होंगे. कोई गॉड फॉरबिड, अब वो पाकिस्तान में हाल आ गया है कि आप खवातीन जो है 14 अगस्त को बाहर नहीं निकल सकती. आप देखें आए दिन लाहौर, इस्लामाबाद, ये जो एक बहुत मशहूर मीनार पाकिस्तान वाला केस हुआ था उस टिकटॉकर के साथ, इस दफ़ा इस्लामाबाद में लड़कियां अगर बाहर निकल आए खुदा ना खास्ता, तो ये तो लोग पागलों की तरह उनके ऊपर टूट पड़ते हैं. यही तो बात हम करते हैं कि आप वहां सुधर जाओ, हम यहाँ सुधर जाएंगे. जब when you can't handle your culture and your values on this and that, तो फिर हमें कुछ ना बने, बिकॉज आप मुनाफिकत कर रहे हैं. आप पहले अपनी चीजें ठीक करें. यहाँ पे लोग चल नहीं सकते यार. People don't understand आपका political के जो listen, what we're doing is political. I understand that. But I'm talking about the political aspect, the political life that's in your country, right? Which is इमरान खान ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया. People don't care about that. People, you know, economy ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, it's out of their domain. ये तो नहीं कि एक बंदा कर सकता है. But अगर इतनी अंडर स्टिमुलेशन का कुछ है ही नहीं, you know what most people do? You know what most people do for entertainment? आपका जो नॉर्मल यहाँ पे लोग हैं पाकिस्तान में, बिकॉज हम और आप तो नॉर्मल नहीं है, we're very privileged, we're amongst the elites. अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर कमा रहे हो, you're not middle class. That's not the stratification that's going to be there for you. But आपको जो आम आदमी है वो जाके फुटपाथ पे बैठ जाता है घास में, बस लाइटें देख रहे थे रोड पे. आई रिमेम्बर, ये याद है जो इम्तियाज है जहाँ पे जो डिफेंस की तरफ रास्ते जा रहा था, जो पुल है, बैक इन द डे, डू यू रिमेम्बर उन्होंने मुशर्रफ वाले टाइम पे लाइटें लगाई थी यहाँ पे. अच्छा, मैं आई एम नॉट फ्रॉम कराची, यू नॉट फ्रॉम कराची, सो आई रिमेम्बर लाइक पीपल यूज्ड टू बी, वो खड़े होकर देख रहे होते थे बस. It's so sad. It breaks my fucking heart that you have a people, छोटे से रंग देख लेते हैं ना लोग, खड़े होके बस देख रहे होते हैं कि ओके, you know what that does to a human being. आपको लगता है कि आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस इतना बड़ा मसला है. People are suffocating here. उनकी रूह मर गई है यहाँ पे. And if you don't give them this, you will kill them one by one and they will be alive while they witness their deaths. You cannot do that to human being. You cannot. That's not how you treat human beings. आपने एक zoo पे बनाया हुआ है. मेरा zoo इतना बड़ा है ना, ये कराची is one of the biggest zoos on the planet. कि zoo नहीं है, मैं नीचे नहीं जा सकता, मैं इस गली में नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, इस डर में मोबाइल चोरी हो जाएगा, फलाना बंदा मार देगा, ये हो जाएगा. अच्छा जी, अगर मुझे किसी ने कुछ कर दिया तो मैं हॉस्पिटल किधर जाऊँगा, वो एक्सेस नहीं है मेरे पास. हॉस्पिटल जाऊँगा तो you know ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगी, क्या कोई कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या कर. सर वाकई में मैं तो अगले दिन भी एक दोस्त से बात हो रही थी और मैं यही कह रहा था कि कराचीआइट्स का आखिरत में हिसाब नहीं होना चाहिए. इनको डायरेक्ट जन्नत में जाना, इनको डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में ही देख चुके हैं. It's one of the least livable countries on the planet. कराची is second or first least livable place. मैंने कोई पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पे, उसमें तो नंबर 1 पे था least livable. अब उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये नहीं पता. ज्यादती नहीं है वाकई में. मतलब अगर बात की जाए तो आखिरत वाले दिन हम तो खड़े होंगे सारे कराची वाले, अल्लाह ताला से बोलेंगे कि आपने पूरी दुनिया को अलग बनाया और हमें तो आपने जहन्नम यहीं पे दे दी है. हमें अब जन्नत चाहिए. हाँ, डायरेक्ट हमें. तो because it is, I mean, अगर चल let's get into a theology a bit. अगर हमने religion की बात निकाल ली है, what exactly is जन्नत and जहन्नम? If I'm looking at, you know, eschatological perspectives, or if I'm looking at even you know, इब्न अराबी की ले लेते हैं, ठीक है, his work, और अल्लामा इकबाल की, these are states of the mind, right? ये तो नहीं है कि जैसे phase 7 या phase 2, अच्छा जी जन्नत भी ऐसे भी लोकेशन है, नहीं, it's a state of the mind. If you're a good person,
then you will be rewarded with that bliss. You know that Jannah is a state of the mind, a state of the heart, a state of the soul. तो peace और tranquility आपको मिलेगी. तो फिर अगर if it's a state of the mind, तो फिर कराची वालों की state of the mind कैसी है भाई? जहन्नम में नहीं है और किधर है? बिल्कुल सही बात है. क्योंकि अल्लाह ताला भी यही बात करते हैं ना कि अजाब क्या अजाब, ये थोड़ी कि ज़लज़ला आ जाएगा, चीजें गिर जाएंगी. वो वाला अजीब सी बातें हो रही थी ना कि लड़कियों ने जीन्स पहनी, अजाब आ गया. नहीं, this isn't the azab that they're talking about. You think an all powerful God is so petty and he's so incapable that he will give you a azab that has authority or agency over your physical body? No, he's going to have agency over your soul, and that's the azab that we're talking about. कि आप खत्म हो जाते हो यहाँ से, तब जब एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं. तो टाइम अब आ गए. हाँ, लोगों का हाल यही है कि यहाँ से तो. बट मसला ये है ना कि इस चार दीवारी से, इस जू से निकलो तो बाकी सारे तो सुकून में बैठे हुए हैं. जो काफिर हैं, जो जन्नत में जाएंगे, वो सुकून में बैठे हुए हैं. उनका तो बेहतरीन चल रहा है. वो अपने बच्चों के साथ भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनके बच्चे भी हेल्दी हैं, उनको एजुकेशन भी दी जा रही है, हेल्थ केयर भी दी जा रहा है, हर चीज जा रही है, एंटरटेनमेंट भी है. तो वो तो है. हम जहन्नम में क्यों है? अच्छा ये भी नहीं. वो अच्छा फिर हम मुसलमानों पे आ जाते हैं. अगर इस्लाम की बातें हो रही हैं और ये हो रही हैं तो अच्छा जी, ये घूम फिर के जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड है, हम क्यों इसमें से एक यूनिक सी एक चीज निकल आए हैं? अफगानिस्तान साइड, पाकिस्तान इतना हम क्यों फंसे हुए इस तरीके से? क्या यूएई में मुसलमान नहीं रहते? क्या सऊदी अरेबिया में मुसलमान नहीं रहते? क्या लीबिया में नहीं रहते? मोरक्को में नहीं रहते? इन जगहों पे नहीं रहते? तो हमारे ऊपर कौन सी ऐसी खास हम कौन से, एक तो ये भी एक आपको पागल बनाने वाली चीज होती है कि हम लोग खास मुसलमान हैं. I'm sorry, but when you're one of the worst people on the planet, I agree. आप एक गोरा बंदा देखते हैं जब, तो आप उसके पीछे जाते हैं. आप उस गोरे के साथ बैठते हैं, आप उसको दिखाना चाहते हैं कि हम इतने मेहमान नवाज, इतने अच्छे हैं. जिस दिन आप अपने लोगों के साथ इतनी अच्छाई दिखाना स्टार्ट कर देंगे ना, फिर हम बात करेंगे कि आप कितनी अच्छी कौन है. So that is the issue here. सही बात है. हाँ, I agree. We need to give people the freedom and the space to move, because what they're not realizing is कि you know what happens. Usually this is a cycle. What happened after World War II? Nazi Germany, you know, Mussolini is there, Franco is in Spain, all of these. This is right-wing governments, right? What happened after right-wing governments came? Left-wing governments came. Liberalization happened. You know, पहले तो France में you couldn't be on the beach naked. You know, bikini पे fine होता था. Now France is the, you know, flag bearer of liberty. ये कर नहीं सकते. That happens. Now what's happening in Europe? You've got Marine Le Pen and all of these guys coming in, right? Trump is तुम्हारा एक पूरा wave, right wing. The world is turning right wing again, and वही होता है. When the left pushes a lot, right wing आता है. When the right wing pushes a lot, वो हो जाता है. Let's talk about Pakistan now. What do you think is the dominant force in this country? The Islamists, you know. Right, you've got the right wings, even not even like Islamist. We're talking about generally, it's a conservative society. It is, right? And it has always been a conservative society. What exactly? And this is a fun little thing that people don't understand. I spoke about demographics previously in my other podcast. मुझे एक बात बताएं, अगर अभी सारे हमारे पेरेंट्स की एज, ये सारे जो थे ज़ियाम वाली रिजीम में बड़े हुए हैं, उसके बाद बड़े हुए, they're how old are they? 50? 60. What's the average life expectancy in Pakistan? I think 60s में होगी. 60s में होंगी. How many people are going to die in the next 10 to 20 years? And how much of your youth is below 30? 60%. 60%. Yeah. ये सारे right wing है? I think ये सारे TikTok पे बड़े हुए हैं, ये सारे Instagram पे बड़े हैं, ये सारे इस चीज़ पे बड़े हैं. They're very malleable as well. तो जब इनकी तरफ से pushback आएगा, and you believe कि ये 60% जो है, ये राइट विंग नहीं है. नहीं. They don't know what they are. They have no idea. Whatever it's going. Identity crisis है इनका. Identity crisis भी नहीं. I think we use that word very freely in Pakistan. कि identity crisis आ गया हमें. नहीं. Here's the fun little bit. इतना बच्चा है. ये जब निकलेगा और आप उनको कुछ नहीं दे रहे, do you have any idea what's gonna happen in this country? What happened in Bangladesh? Who were these kids? हाँ, जो students movement थी पूरी, there's so many kids. Jobless. ये लोग, they know a lot about their isms. They have done, उनको पता है सारी चीजें. They've got access to internet. You need to give them a platform to blow that steam. What a lot of people in this country don't understand is that जब ये लोग जब सड़कों पे निकलेंगे ना,
तो बच्चा जब रो रहा होता है तो आप उसको लॉलीपॉप पकड़ा देते हो. You need that lollipop. And I'm not saying कि नहीं, you shouldn't have democracy and democratic rights, नहीं, तो अरे पागल है, इनको रखो. I'm just trying to explain something which will bring a balance. You can't give everyone in this country their leeway कि push करते हुए जाएं, governments गिरा दें. That's not our work. We live in a dangerous neighborhood. I'm not the sort of person who says कि वो पाकिस्तान आर्मी हट नहीं होनी चाहिए. I feel like they're a necessary institution. वो नहीं होंगे तो फिर आप उसके बाद हालात देखिएगा हमारे कैसे होंगे. And it's true. I'm not saying कि वो नहीं हमारे borders पे खड़े होकर हमारे जगह लड़ रहे हैं. नहीं. We have a lot of non-state actors here. Who else is going to protect that? Like, you know, who else is going to protect the polity? So when these kids, when push comes to shove, when they get out, you can't, आप signals नहीं बंद कर सकते. कितनी देर बंद करेंगे? कितनी देर बंद करेंगे? अभी इस बंद किया तो इकोनॉमी आगे पीछे हो $300 मिलियन का लॉस हो गया इकोनॉमी को. पूरी दुनिया ने आपको गालियां देनी शुरू कर दी कि भाई आप क्या, आपका मुल्क है, बिजनेसेस यहाँ से निकल जाएंगे, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं. आई स्वेयर ये जो बस बंद कर दो ब्लैकआउट, क्या उसके बाद क्या दोगे? सब्सिडीज दोगे, पेट्रोल सस्ता कर दोगे. सब्सिडीज में क्या होता है? सब्सिडीज में यही होता है कि जब आप ये सब्सिडीज देते हो इकोनॉमी और हिट होती है. जब इकोनॉमी आपकी लॉन्ग टर्म ठीक होगी, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, लेकिन जब तक टाइम लगेगा तब तक क्या दे रहे हो? Give them their circuses, give them their breads, give them a place to be. सांस लेने दो उनको, सांस लेने दो. हाँ, क्योंकि अगर ये सांस नहीं लेंगे ये पागल हो जाएंगे. एंड एक पागल कुत्ता होता है ना, वो पागल इसलिए होता है बिकॉज उसको अब्यूज किया जाता है. और जब पागल हो जाए, यू नो, डॉग्स आर ब्यूटीफुल एनिमल्स, भाई क्यूट से होते हैं ये वो. बट उस पर ये बड़ा मसला है हमारे मुल्क में. ठीक है, आई डोंट बिलीव दैट के यू नो यू हैव एन एनिमल दैट्स सो मच. सूरह काफ में था ना कि एंजल्स केम एंड एवरीथिंग, शिकार भी हलाल है. हाँ, सो वो है कि हमने अपनी तरफ से अपना मजहब बना लिया. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इफ यू अब्यूज अ डॉग इनफ, he will lash out at you. And when a dog lashes out at you, he's got sharp teeth. These kids have sharp teeth. Yeah. They know a lot. They know about organizing. They know about politics. They have, इन्होंने Marxism भी पढ़ा हुआ है. इन्होंने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं. You need to give them something. तो Hamza, do you think कि so with your whole DJing thing, कोई स्टेट की तरफ से आपने कहा कि यार कोई बच्चों को to blow off that steam कोई मौके दें, तो आप जब अपना ये डीजेइंग वाली चीज पूरी कर रहे होते हैं, डू यू फेस एनी हिंड्रेंसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट? नहीं. या फ्रॉम द पीपल एट लार्ज? किस तरह हुआ कोई लोग बाहर पहुंच गए हो कॉन्सर्ट के, बंद करो ये हराम है? नहीं कभी नहीं. पार्टीज पे कुछ भी जाता है ना ऐसा. हाँ, पर आप सिक्योरिटी रखो, तरीके से करो तो क्यों होगा? आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है, आपने बताया हुआ है आपकी. सो दीज इवेंट्स आर लाइक प्रॉपर फॉर्मल events जिनमें परमिशन ली जाती है, NOC वगैरह होगा. It's a corporate entity, we do that. Listen, what's wrong is wrong. ठीक है, you have to respect the state, you have to respect the polity, you have to respect the culture. ठीक है, अगर मैं किसी जगह पे कर रहा हूँ, we were doing events in TDF and the first thing I said was, do we have the consent of the community around here? Right? T2F में नहीं, इस TDF का जो मैग्निफिसेंस म्यूजियम है. अच्छा, हाँ, ठीक है, the museum went and वो किया. So यार आप इस तरह you can't come guns blazing. I'm standing here, I'm saying something that's very political कि यार give people their breathing space. तो मैं ये नहीं कर सकता कि oh look at me, मैं बस you know नंगा होके आ गया हूँ, नाच रहा हूँ, I'm going, you know, screw your culture, screw your values. No, I'm going to explain to you why this matters. I'm going to take your consent and साथ लेके चलते हैं, because I need you to understand कि आपके बच्चे भी इसमें suffocate होके मर जाएंगे. And when it comes to DJing and music and all this is a form of expression. It could have been anything else. My form of expression is kind of radical because it's, you know, in the moment, it's glamorous, it's happening, it's very fun. It was kind of an adventure. Also, आपकी बातों से भी पता लगता है कि you're very political और उस तरह से. Yeah, because I think आपके music में भी आता होगा. So it does come in. I mean, you know, music has to be something. Music is inherently political. I'll tell you something. It is. Art and music is political. अगर आप मुझे बोलते हैं कि यार क्या आर्ट एंड म्यूजिक इनहेरेंटली पॉलिटिकल होता है, समटाइम्स इट्स नॉट. समटाइम्स एक पेंटिंग बड़ी प्यारी पेंटिंग होती है, बट इफ यू लुक एट द 20th century, even the 21st century, all art movements and all artists have had a political background.
they're political, right? Every artist has a responsibility to be political because you are representing something. अगर मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं सिर्फ पार्टीज करा रहा होता और मैं इसको इस तरह लेके चल रहा था कि नहीं मैंने enjoy करना है, मैंने ये करना है, मैं किसका फायदा हो रहा है? Isn't that very selfish? कि I'm just looking at it as a commercial thing या इस तरह. भाई that's what I keep saying. A lot of people who go to raves वो छुप के बैठे होते हैं and all of that. I'm like, don't be a coward. If you're going to be a part of this, be a part of this properly, right? You're not doing something wrong. You were literally. अगर कर रहे हो तो फिर do it with conviction. Like ये तो वो I think अगर खुश होना कोई जोर में तो फिर बांधने कड़ी पढ़ा दे हमें क्या मतलब कौन सी गलत चीज़ हो रही है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कमिंग बैक टू द थिंग इज कि यू नीड टू आराम से लेके चलनी होगी. आई बिलीव इन बैलेंस. आप तमीज से चीज़ें करें, आप स्टेट को इन्वॉल्व करें, उनके साथ बैठे उनको बताएं कि व्हाट वी आर डूइंग. आप कम्युनिटीज जो आपके आगे पीछे हैं उनके साथ करें. सो आई वाज सेइंग सी आई नो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी. एक साइड ये है कि जी आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट है, वो बोल रही है कि दिस इज हॉटस्पॉट और व्हाटएवर, दिस इज द प्लेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रग कंजम्पशन, राइट? हाँ, वो ड्रग कल्चर में इसी पे आने वाला था कि हाँ. I understand that point. I hate that. Like, आपको why can't you be responsible? If you need drugs to partake in this thing, then this isn't for you. Okay. Why? आप उसको गंदा क्यों कर रहे हो? Why are you linking this with drugs? Now, on the other hand, I know this argument. It's an illegal substance. You can't use it. But at the same time, there's another argument. I'm giving you the institutions, organizations की argument, and I'm giving you the perspective of the other person, which is कि यार जिस मुल्क में मेरे पास कुछ भी नहीं है तो उस मुल्क में why don't I have the freedom to experiment with my own consciousness, right? मैं ये भी बात समझता हूँ क्योंकि आपकी पूरी इतनी जो प्रोडक्शन चल रही है इधर, yeah, you're in the crescent, right? This is where all the drugs are. आप वो solve नहीं कर रहे, then that comes to the point that is the major thing that we need to focus on, which is that क्या आप और मैं ड्रग्स लेके आते हैं यहाँ पे? हम तो नहीं लेके आ रहे ना, हम तो नहीं बेच रहे ना, हम तो इसमें नहीं कर रहे ना. सोर्स क्या है? हाँ, जो उसको पकड़े ना आप उसको ढूंढे. पूरा सिंडिकेट चल रहा है. मैं वही सोचता हूँ, मुझे ज़्यादा डिटेल पाकिस्तान में नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप नार्कोस वगैरह ये सब शोज देखें कि उस टाइम पे 80s में या 70s में जितनी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी थी, मेरा ये ख्याल है, और ये एक बिल्कुल लेमैन नॉलेज, बिल्कुल मुझे कोई इसके बारे में खास नॉलेज नहीं है, लेकिन 2024 में आई बिलीव कि पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड ड्रग्स की अवेलेबिलिटी क्या ज़्यादा नहीं है? तो अगर तब इतने बड़े सिंडिकेट्स थे तो अब तो मेरे ख्याल में और भी बड़े होंगे. तो वही तो बात आ जाती है कि आप नहीं लेके आ रहे, मैं नहीं लेकर आ रहा, आप नहीं बेच रहे, हम नहीं बेच रहे, जो बेच रहे आप उनके पीछे जाए ना. ओके, अब दो इसमें आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि यार if this is going to continue in Pakistan, then you need to make sure that it's safe as well. Drugs को हम नहीं आने दे सकते. But मेरा काम नहीं, there is an organization for that. It's called Anti-Narcotics Force. But Anti-Narcotics Force को भी आप ट्रेनिंग दें कि ऐसा ना हो कि आप जाके इवेंट के बाहर खड़े हो जाएं और तो गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं कि नशे किधर हैं, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो. अच्छा, ऐसा होता है पार्टीज में? हो चुका है. We fought with them कि यार आप क्या बदतमीज है, आपको तमीज नहीं है किस तरह काम कर रहे हैं. तो वही है कि अगर आपने जाहिलाना ऑफिसर्स रखे हुए तो किस तरह काम होगा. You should क्या दुबई में they don't have anti-narcotics or they don't have police serving? Crazy कर रहे होते हैं. वो सिविल कपड़ों में जाते हैं, वो अंडरकवर काम कर रहे होते हैं. ये तरीका थोड़ी होता है कि बाहर जो है कोई भी क्लब हो, सोहो गार्डन के बाहर इस तरह थोड़ी होता है. पुलिस करती है जी चेकिंग कराएं, अच्छा गाड़ियों से निकलें, ये वो जूते मोजे. दिस इज इंसल्टिंग, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी. आपको अपना काम नहीं करना आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग पीपल. आई एम ऑल फॉर अ क्रैकडाउन ऑन ड्रग्स. It's a menace, honestly. यहाँ पे कुछ तमीज़ पता नहीं क्या क्या गंदी चीज़ें आ गई हैं. But at the same time, I also understand there's a way of doing this. And the ANF and all these agencies, they need to understand this कि आप लोग इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, because what happens is कि आपको ही लोग गालियाँ दे रहे होते हैं फिर. आप तमीज़ से बात करें, आप तमीज़ से जाएं, आप you know what, work with us. If somebody is listening to this podcast, maybe you edit it out and we'll make like a reel and I'll put it on my profile. इधर मैं बैठा हुआ हूँ, I'm on Upclose. Ahmed, I am sitting here, I am saying work with us. You want to eradicate drugs from the nightlife, you want to eradicate drugs from this culture, electronic music, work with us. हमारे साथ हैं. हम तो अलाउ नहीं करते, हमने तो बहुत बड़ा एक रखा होता है कि आप you can't bring alcohol, drugs to our events. हाँ, you can't do that because it's an illegal thing. We're a corporate entity. आप नहीं कर सकते हमारे events पे. पर अगर वो करना है तो आप हमारे साथ cooperate करो. Go for that.
हाँ. ये तो नहीं है कि आप लोगों को सिविलियंस को जलील करना स्टार्ट कर दो. डू योर जॉब, गो आफ्टर द सप्लायर्स. क्योंकि उनका तो वही आइडिया यही होता है कि बस ये जो बच्चे हैं इनके पास कुछ मिल जाएगा और हमारी दिहाड़ी लग जाएगी. So is are you really here to stop an abuse of drugs? या अपने पैसे बनाने हैं? अपने पैसे exactly. तो वही है, हम बोल रहे हैं. I'm saying it here. I do events. Come with me, cooperate with me. मैं आपके साथ बैठूंगा. We'll come up with strategies on how to eradicate this menace of drugs. We'll do that, right? Sir, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सबको मोजे उतार रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, कपड़े उतारो, बैग दिखाओ, ये करो, और फिर जैसे ही आप पूरा कर लेते तो आप ये नहीं बोलते कि ओ अब हम लोग ये एविडेंस में दे देंगे या फिर हम ये करेंगे. आप बोलते हो अच्छा जी कितने का बिकेगा ये आज? नो वे. ये डायरेक्ट आपसे पूछते हैं? नहीं, मुझसे नहीं पूछ रहे. जो दूसरे अपने पूछे वो नहीं पूछेंगे, बट वी ऑल नो दिस, राइट? तरीकेकार यही है. Not arresting anyone. They never arrest anyone. Because they know ना कि आगे क्या ही जाएगा. Confiscate करेंगे, क्या होगा, खुद और लंबी पंचायत होगी, कौन FIR काटे, कोर्ट लेके जाए, इधर ही मुक्का कर लो. क्या होगा उन चीजों का, सब्सटेंसेस का, अपनी कंजप्शन होगी या फलाने किसी को गिफ्ट दिए जाएंगे. शराब भी पकड़ी जाती है, वो कभी भी एविडेंस लॉकर में जाती नहीं. अच्छा जी फलाने को इसको दे दी, इधर चली गई, ये हो गया. So if you want to do this properly, we're here. अगर आप बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला नाइट लाइफ का या फिर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का सबसे बड़ा मसला ड्रग्स है, sit with us, let's eradicate drugs. If you're serious about this stuff, we'll sit down with you and we'll make sure that we make these events and this industry a drug-free thing. I understand everybody has a right to their, freedom to experiment with their consciousness, but I also understand the sort of menace and the harm that comes with this way. So if you guys are serious, I'm speaking this. If the authorities are serious, sit down with us. We'll formulate a plan to help eliminate the drugs. But बात ये आ जाती है कि अगर लिमिट करेंगे तो फिर मतलब फायदा खत्म हो जाएगा, दिहाड़ी खत्म हो जाएगी ना सर. तो while that is happening, all we're asking is कि आप मुनाफिकत को छोड़ दें, फिर हमें अपनी चीजें करने दें. Because in my head एक तरफ मैं अपना इवेंट करा रहा हूँ और एक तरफ आप आके किसी चीज के ऊपर भी क्रैकडाउन करना चाह रहे हैं. मेरे इवेंट पे तो कोई गलत नहीं हो रहा. पीपल आर हैविंग फन, दे गोइंग होम हैप्पी, दे मोर पॉजिटिव, दे गोना अच्छा काम करेंगे सुबह को जाके. ठीक है, दे गोना बी लाइक अच्छा ठीक है यार मेरी पाकिस्तान इजंट सो बैड. आपके काम में तो लोग गालियां दे रहे हैं आपको और बोल रहे हैं यार ये इदारे खराब है, निकलो इस मुल्क से, जलील करते हैं, ये वो. यू कांट ट्रीट पीपल लाइक डॉग शिट. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आई एग्री. तो यू थिंक कि हमजा कमिंग टू द नाइट लाइफ सीन इन पाकिस्तान, डू यू थिंक एक नेसेंट एक इंडस्ट्री बन रही है या इट हैज ऑलवेज बीन देयर? एक छोटी सी नीश एक नीश थी हमेशा से. I mean you can't say a lot of people come up and they're like, oh you're not changing anything, ये पहले से था. I'm like I understand पहले से था. We're not saying कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लेकर आए, हमने इजाद की है. We're just saying कि we're the first ones जो आके आपको बोल रहे हैं कि हम करेंगे ये, एंड हम इसलिए करेंगे बिकॉज इसमें मुल्क का भी फायदा है, अवाम का भी फायदा है, सबका फायदा है. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. यू डिडंट डू दैट. आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे होते थे, आप अपने डीजे साइट्स पे जा रहे थे, आप अपनी बीच पार्टीज पे जा रहे थे. नन ऑफ यू गाइस केम फॉरवर्ड, नन ऑफ यू फॉट फॉर व्हाट यू बिलीव्ड इन. सो बात सिर्फ वही आ जाती है ना कि फिर तो हम बोलेंगे यार वी जंप स्टार्टिंग दिस, वी स्टार्ट दिस because this is the movement that we're doing. Good, yeah, very nice. And how often do you perform generally in a month? I have a lot of work. Okay. I take very less gigs. I only take gigs जिसमें मुझे लग रहा होता है कि यार नहीं ये अच्छी चीज़, ये मज़ा आएगा इसमें. So basically I played last Friday. I played at Habib University. Okay. Right. So the message I got is कि Habib University कैसे चले गए? Like you would never take a college or school. This is below you. I was like no, it was fun. I wanted to go to Habib University. मैं चला गया. So that's and was it fun? It was fun. These kids were going crazy. It was really fun. Good, yeah. So and it's good. I mean, they're also it's good to have these kids understand that they can have safe spaces where they can just be themselves, enjoy themselves. हमारा जो concerts वाला भी अच्छा, एक तो आतिफ असलम में concert पे चलाओ, फलाने concert पे चले जाओ, राहत फ़तेह अली खान concert पे चले जाओ, वहाँ लड़कियाँ हरास हो रही हैं, सब खड़े हुए हैं, nobody is doing that. If you give them space to be themselves, right? So they will enjoy karo, just dance, have fun. You want to know what's the biggest indication that a child is healthy mentally, physically, is that they will do weird shit. तुम्हारे सामने आएगा, यूं करेगा, उल्टी सी शक्लें बनाएगा, नाच रहा होगा, गा रहा होगा, फिर भाग जाएगा. That's an indication a child is healthy. कोई insecurities, कोई मसाइल नहीं है. If a person is safe
and secure and mentally well, they will act themselves. हमारे यहाँ क्या होता है, सही ना, फौज बनाई हुई, खड़े हो, हाँ सीधे हो, सलाम के सामने इस तरह करो, ये करो. You know what that does to a child? आपको अंदाजा है अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? Okay, let's get into it. I don't know if that's a sort of podcast, but no, sir, please feel free. You want to know what's Pakistan's biggest मसला? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? इतने सारे हैं कि एक मसला है जो मैं बोलता हूँ कि मैं अभी भी खड़ा होने के लिए रेडी हूँ कि this is the biggest मसला that our country has. Okay. And that Guess is? करें, I'll give you 3 guesses. Lack of education? नहीं. No? Extremism? नहीं. नहीं. All of these are coming from that one root cause. Lack of freedom? नहीं. You know what happens to almost every kid in this country before the age of 5, before the age of 4? They get molested. Every kid, you're saying? कितने बच्चे होते हैं? I know कि it's very prevalent. It's very prevalent. हाँ. But I didn't know कि हर कोई है. You sit down with people and you will see that there is an overwhelming majority. If it's not every kid, it's almost every kid. यहाँ तो चाचे मामे ये वो, you know, that happens. ठीक है, your own relatives do that. यहाँ कारी साहब की तो वैसे हमारी बड़ी मशहूर होती थी, मजाक वगैरह. हाँ, जोक्स सभी तक होते हैं. या फिर you know मोहल्ले में या कोई हाउस हेल्प. हाँ, हाउस हेल्प कोई होगी. हाँ. We have an epidemic of child abuse. हम अपने क्या हो रहा होता है यहाँ पे? कितने केसेस आते हैं बच्चों के साथ? वो तो केसेस हमें पता होते हैं. ऐसे बच्चे होते हैं जो छुप के चलते कितने बच्चे बोलते ही नहीं इस बारे में. हाँ, बच्चा इतना छोटा होगा वो बोल भी नहीं सकता. Their brain just shuts them off. उनको याद ही नहीं होंगी कभी ये चीजें. So much shame is attached कि वो चुप हो जाते हैं. चुप हो जाते हैं. I think इतने छोटे मासूम बच्चा तो प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि उसका हुआ क्या है. जब when you have this is, nobody talks about this, let's be honest, but isn't this a very common thing? जब आप पूरी की पूरी आपकी मुल्क ऐसा होगा, कितनी पॉपुलेशन है? 25 करोड़. 25 करोड़ है. मैं गारंटी लगाने को तैयार हूँ. I don't have the data to back it up. I don't have it, but we all know this. We don't say it. आपका एटलीस्ट 22-23 करोड़ बच्चा ऐसा है जो बचपन में मोलेस्ट होके बड़ा हुआ है. तो आप मुझे बताएं कि आपका पूरा मुल्क कैसे चल रहा है. तो डोंट यू थिंक वी आर गोना बी अ स्टंटेड कंट्री? फिर हम लोग यूं ही खड़े होंगे, mentally messed up, all of that stuff. That's a huge problem. You need to let people be as they are. You need to let them talk about stuff. You need to let them be free. And one of the ways that we're doing this is electronic music. यार ये नहीं है कि हम सिर्फ पार्टियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. This is a rational है ना उसके पीछे. हम पागल थोड़ी हैं, बेवकूफ थोड़ी हैं. ठीक है, हम आपको क्या लगता है कि ओ जी हम आपको हटाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं, हम ये बहुत यार ये हैं, इस तरह के हैं, हम लिबरल होना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं. इट्स रैशनल. मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इज माय प्लेटफॉर्म. क्या उस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं बातें कर रहा हूँ सारी? Is that the cause of it, right? I'm doing that, right? That is just one aspect of it. Let people have comedy. Let them speak about things. Let them write. इतनी censorship कैसे रख सकते हैं आप? इतनी रोक टोक कैसे रख सकते हैं? The thing that I'm doing is the first step. Right? What we're doing, and this is the rationale behind the entire thing, is कि हम लोग पार्टियां नहीं थ्रो करें. We're trying to reclaim public spaces. What is the most radical way to reclaim public spaces in a country like Pakistan? Have fun. Having fun is the most radical thing, right? Yeah. उन public spaces में if you are having fun, खुले में, वैसे यहाँ पे इतने फन पुलिस है, जब आप वो कर रहे हैं तो क्या इज दैट एन एक्ट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द स्टेटस को? कि यार आई एम गोना डू दिस. एंड जब ये चीज होगी, क्या इससे ब्रांच आउट होके अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन will they be available to people? Will people start acting on this? That's a rationale. Good, yeah. Very nice. That's how things can be. आराम से. आहिस्ता. Because अगर मैं किसी को बोल दूं, किसी को लेकर आ जाऊं और मैं उसको बोलूं कि नहीं हम लोग एक बुक क्लब बनाएंगे. I'm like screw your book club, right? मैं उसको बोलूं आर्ट गैलरी चलते हैं. like so ड्रामा देखने चलते हैं. थिएटर is also very powerful form of art, and I'm glad we have that in this country. थिएटर चल रहा है, बैठेगा करेगा. सबको नहीं जाना होता, ठीक है. मूवीज तो हमारी इतनी बनती नहीं है, ड्रामा तो स्टंटेड है, इतने इंटेलेक्चुअली डिवॉइड है ऑफ एनीथिंग हमारी. तो फील अटैक्ड. सॉरी नहीं जो बात तो सच है. तो अगर मैं फिर ये देखता हूँ कि यार ठीक है हमजा, आपके सामने सारी ऑप्शंस हैं,
आप इसमें से क्या चूज करना चाहेंगे? मैं देखूंगा कि यार ये एक फॉर्मेट है जिसमें बड़े बड़े सेट्स, अमेजिंग, यू नो, ऐसा लग रहा होता है आप यूर इन सम अदर वर्ल्ड एंड लाइटिंग एंड डांसिंग एंड मैजिक. अब मुझे एक बात बताएं, उसमें किस किस को आना होगा? सबको एक्सपीरियंस करना होगा. हर बंदा बोलेगा यार एक दफा मैं तो देख के आ जाऊँ, वो किसी भी वजह से आ रहा हूँ. मतलब आधे सारे लोग आर्ट के लिए नहीं आ रहे. मैं आपसे इसके बाद बात करूंगा कि नेक्स्ट कब हो रहा है, अगला कब हो रहा है, क्या हो रहा है, यू नो, पीपल आस्क दैट. वो बोलते हैं कि यार कब हो रहा है. जो थोड़े से बगैरत से लोग होते हैं वो तो इसलिए आ रहे थे कि अच्छा लड़कियां होती हैं वहाँ पे, चलो यार फिट है. इस तरह के भी लोग आ रहे होते हैं आपके पास. हाँ, लेकिन हम आने नहीं देते बिकॉज़ एक पूरा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है. आपको फॉर्म फिल करना होता है प्रॉपर, लाइक यू हैव नो स्टैग्स अलाउड. वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद हाउ, you know, how we let in who can come in. We just want to have normal people. Most of the people that come here are like, you know, married people who are just coming with their spouses, having fun with their families, you know, groups आ रहे होते हैं, cousins सारे. That's what Shotbox is. We want to have like a, I think stand-up comedy में भी अक्सर इसी तरह की audience होती है. So more or when less people, but generally मैं बता रहा हूँ कि if you know, I'm looking at it, okay, I'm looking at this platform, electronic music, parties, raves, ये वो, now everybody wants to go there. Everybody, I don't want to hide anything. मुझे पता है कि जब सच बोलेंगे फिर बात निकलेगी. क्यों जाना चाह रहे हैं लोग? अच्छा, कुछ जाना चाह रहे हैं बोर्डम की वजह से, कुछ जाना चाह रहे हैं फोमो ना हो, कुछ ऐसे भी होते हैं. बहुत सारी ऐसे सीन्स मैंने देखे हैं जहाँ पे जो है ना, मतलब बात उसको सुनने में आती है आपको बात है कि वो इज गोना बी हॉट चिक्स ओवर देयर चलते हैं, या फिर अच्छा ये फलाना ग्रुप जा रहा है. एवरीबॉडी हैज देयर ओन, यू नो, मोटिवेशंस. बट they get to dance with girls. हाँ, अच्छा ठीक है, ओ मैन आई हैव अ क्रश ऑन हर, वो जा रही होगी, यू नो व्हाट, स्क्रू इट, चल. तो एवरीबॉडी हैज देयर मोटिवेशंस, फनी स्टफ. बट सब जाना चाहते हैं. जब ऐसी चीज आपको मिल गई है जिसपे सब जाना चाहते हैं, इट्स क्रेजी, एडवेंचरस, ग्लैमरस, ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो फिर क्या आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे as a tool to proliferate what your, you know, whole identity and philosophy is about, what your ethos is about? So it's just a tool. It's just a tool. That's what Shotbox is. We're using it, and in the last couple of years, because जो बंदा उस पे जाएगा ना, उसे अभी हमने बात की कि बहुत सारे लोग अलग अलग इवेंट्स पे जाते हैं, अपनी होती हैं. When you come to Shotbox, there's a process that you have to do. We're only going to pick people who are here only for one reason. That's for the music. Not for any other reason. कोई और motivation ये नहीं कि लड़कियों के लिए ये वो हमारा वास्ता नहीं. You have to come there for the music if you enjoy the music, because we're going to, you know, stalk you and everything. We're going to see who you are. When they come there, let's say there's so many people who come for the first time. When they come there and they're in this, you know, otherworldly space, maybe in this podcast when you're editing it, आप एक मैं आपको पिक्चर दे दूंगा, आप लगा सकते हैं, so people can understand what exactly I'm talking about, right? When they're coming into these spaces and they're so mesmerized and they go home like, what the fuck was this? Right? Are they not going to tell other people? Are they not going to think, yeah, word of mouth से पूरी चीज? Why don't we have more of this? Why is this not happening? Okay, अच्छा ठीक है. अब जब ये वाला thought आ जाएगा ना उनके दिमाग में, तो they're going to start thinking, why don't I have this? What exactly is going wrong? और बेहतर कैसे हो सकता है? What can we do? Like एक normal चीज क्यों नहीं है? जैसे going to restaurants is a thing, या going to the beach. इसी तरह going to a rave. Why is it not a normal thing? When they go to a show, a rave, you know, whatever you want to call it. A rave is a very पुरानी term हो गई, but we still use it. Electronic music show. What do you call it? Yeah, we call it shows because that's what, you know, they are shows, right? Okay. Raves. अच्छा, हमारी raves नहीं होती. We have shows because raves are like, you know, they're about the culture, dark, techno, it's the hardcore stuff, right? So when they're going to these things, they're going to be like, I want more stuff. Why can't I have this? Why can't? And this is the best part. आप एक चीज करते हो, 10 और लोग और चीज करते हैं, right? फिर उसमें मजा आता है. Somebody's coming there, he's like, यार, okay, they're doing this. What do I like? I like comedy. I'm going to start a platform for comedy. Yes. This is how things grow. ऐसे ही बढ़ती हैं. सर मैं खुद as a student जब मैं स्कूल में था लाहौर में, तो थिएटर का बहुत ज़्यादा कल्चर था. लाहौर में हम लोग दोस्तों की अक्सर एंटरटेनमेंट ही वीकेंड्स पे ये होती थी कि कोई प्ले देखने चलते हैं. ठीक है, इतने ज़्यादा होते थे. और शुरू मेरा वहीं से शौक हुआ कि प्लेज इतने सारे देखते थे, और मुझे वही होता था कि यार मुझे भी परफॉर्म करना है, मुझे भी एक्ट करना है. ठीक है, तो वही आपकी बात बिल्कुल वैसी है कि लोग देखेंगे और फिर जब वो कुछ ऐसा देख रहेंगे और उनको फिर खुद भी they will be inspired to do something of their own. I'll ask you just one thing. किसी ने तो पॉडकास्ट स्टार्ट किया था जब स्टीव जॉब्स ने बोला था कि iPod, पॉडकास्ट, it's gonna be a radio show. किसी ने स्टार्ट किया पॉडकास्ट. किसी ने शुरू किया.
इतनी मजे की बात है कि somebody started that podcast thing. Yeah. फिर somebody in Pakistan started. कोई तो होगा ना पहला बंदा जिसने पाकिस्तान में पॉडकास्ट किया होगा. पहले बंदे ने स्टार्ट की, फिर आज मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ. I'm, you know, speaking about all of these ideas. Yeah. So tell me one thing. Will it make a difference? You're trying to. Yeah. हाँ. किसी ना किसी कोई कहीं ना कहीं तो मैं भी किसी शो पे गया होऊंगा. हाँ. किसी ने कोई इवेंट कराया होगा, वहाँ मैं गया, आज शॉर्टबॉक्स निकला हुआ है. This is how things work. They're in this, you know, life is one great river that just branches out into different things. That's how the universe is, right? We're just fractals and patterns and everything just, you know, darah ki branches nikal rahi hoti hain. Hamari bhi that's how destiny works. Idhar. करते आप कहीं पहुंचते हैं. Now we're here. Yeah. I don't know, somebody is gonna... Sorry, हाँ. So पाकिस्तान में और भी players हैं इसमें चीज में. Like is it a budding industry? बहुत मजा आने वाला है. The next 10-20 years, if things work out properly, it's going to be a very lucrative thing. मतलब and you know obviously आप तो क्योंकि इस काम में हैं. The margins are insane in this. अच्छा. Yeah. I was going to come to the economy of it. अभी तो कोई there is no margins है. They were just burning money. हम लोग यूँ तीली जलाते हैं. अच्छा, you guys are burning your own money right now. Yeah. अच्छा. Yeah. Like वो उस तरह नहीं है कि you do a show and you're wealthy. नहीं वो वाला scene नहीं. Because like concerts में I know I have friends in the music industry and they tell me कि हर किसी को टिकट्स नहीं बेचते ना. हाँ. Like जैसे अभी concerts वगैरह के अंदर तो the musicians who've like made it they're making good money. अब तो Spotify भी आ गया, streaming है, YouTube है. Spotify doesn't support anything apart from rap, honestly. It's sad. अच्छा, आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो सेक्स है वही है. हम चुप करके बैठे हैं. We're doing our own thing and we're seeing how it's growing. जब हो जाएगा तब ये सारे corporate भी आ जाएगी. फिर Spotify भी Spotify did partner with us, but they're not supporting electronic music per se. And I understand. It's very understandable because you know they're going to go for where the market is. It's a company, right? They need to make money after that. That's understandable. तो ये है कि CSR भी सर कोई चीज होती है और उसके अलावा पाकिस्तान में नहीं होती कोई CSR. सिर्फ सैलानी होता है और 2-3 और चीजें होती हैं. नहीं सॉरी, CSR से ज्यादा लाइक क्या उसको बोलते हैं जो आपका Do you think a Pakistani क्या आप और भी टैलेंट जो है और भी फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट Do you think as a country we have innovation और insight या हमारा कोई long term strategies होती है? नहीं. उससे अपनी मदद के आपके तहत चल रहे हैं सब. हाँ, हमने अपनी इंडस्ट्री खुद बनाई है. हाँ. Before I started this thing इसको डांस पार्टी गंदी बोला जाता था. अब now it's legitimate shows, right? हम अपना काम खुद कर रहे हैं. We're gonna invest all of what we have. We're gonna do our own thing. हम खुद ही लेके चलेंगे, खुद ही इन्वेस्ट करेंगे because हमारी आंखों के सामने है. We're seeing कि किस तरह ग्रोथ होती जा रही है, right? When the pie gets big enough हम ही खाएंगे बैठ के फिर. हाँ of course. और I think जो पुराना प्लेयर होता है जो शुरू में आ चुका है वो obviously he or she will reap the dividends. The commercial element of that is not the main goal. Actually, you're not in it for the money. Money is going to be a consequence of it. Nice. You chase excellence and money can be a consequence of it. But let's say मैं नहीं जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर. हाँ. मैं नहीं जाता यहाँ से, ठीक है. मेरा कोई ग्रीन कार्ड नहीं आता या मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा. It's too late for me. मैं बोलता हूँ कि अब मैं क्या करूँगा पाकिस्तान से बाहर जाके, right? Am I just gonna sit and be like, it's a shitty country or ये और वो, right? Or I can just get up and do something about it. Yeah. You know, if I get stuck here, if I have kids. अगर इतने तंग हो तो कुछ कर लो उसके बारे में. हाँ. If I have kids, right? And what am I leaving for them? What am I leaving for the city? That's the entire thing, right? What exactly am I gonna do? अब मैं पैसे donate कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ. So yeah, understandable. That's a good thing. We're a very charitable nation, but does it have you need to think holistically. एक पत्थर फेंकूंगा तो avalanche कैसे आएगा? That's what you need to do with this stuff, and you need to leave some sort of legacy, something good. अभी start किया है ना, ये snowball होता जाएगा. 10 साल बाद जो है और बड़ा हो जाएगा. 20 साल बाद it's gonna be a part of the mainstream culture. यार हमें भी चाहिए कोई. Imagine Zamzama आप जाते. Zamzama would have been a street where there is venues and there is food और आप पैदल फुटपाथ पे चल रहे होते और ट्राम्स होती और ये होती. यार ज़्यादा बहुत बड़ी रिक्वेस्ट तो नहीं है मेरी कि मैं पैदल चल सकूं. हाँ, बस ट्राम लगा देते और हाँ
रश नहीं है, वरना तो आप जमजम अभी दिन के टाइम चले जाए, या दिन क्या रात 9-10 बजे तक भी, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। अगर मुझे कोई बोलेगा गाड़ी के पार्क करने की जगह नहीं होती, अगर आप मुझे बोलते कि नहीं गर्मी है वो वॉक नहीं कर सकते, भाईजान गर्मी क्यों आ रही है, गाड़ियां इतनी है, आलूदगी इतनी है, आप जब चलना स्टार्ट करोगे ना तो आप बोलोगे यार ये क्या गंदगी है, दरख्त किधर है। एक तो यार मैं हर पॉडकास्ट में दरख्तों पे फंस जाता हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीज आर सेंटिएंट लाइफ फॉर्म्स दैट नीड टू बी देयर, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज। आप निकलो तो अपनी सड़क पे तो जाओ, आपको ये नहीं पता 2 गलियां छोड़ के मोहल्ले में क्या हो रहा है, तो आप मुल्क को कैसे समझ पाओगे। हाँ। आप गाड़ी से निकलो, आप पैदल चलो, इट्स बेसिक सी रिक्वेस्ट है। मैं कोई बहुत ज्यादा मामूली सी डिमांड है सर, हाँ, मैं भाई दरख्त लगा दो, चलने दो हमें, पब्लिक स्पेसेस वाली बात वही क्लेम करने वाली। तो अब हम गुड यार, आई लाइक द फैक्ट कि आपकी जो पूरी व्हाटएवर यू आर डूइंग उसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है, लाइक एक रैशनल है और इम्प्रेसिव है बहुत, और यू बिलीव इन योर कॉज, एंड बिकॉज यू डू, मैं भी यहाँ बैठे बैठे आपकी बातों से और बल्कि ख्वाहिश भी दिल से निकली कि अल्लाह आपको कामयाब करे और ये पूरी एक मूवमेंट शुरू हो। और वही जो आपने सारी जो बातें रखी कि आउटलेट मिले लोगों को और मौके मिले एंटरटेनमेंट के, यार कोई फ्रस्ट्रेशन निकालने के, कहीं जाके बाहर एंजॉय करने के मौके मिले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और एक छोटी सी डिजायर, एक छोटी सी हमारी ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं है यार। आई जस्ट वांट टू सिट डाउन समवेयर, मैं चलूं सड़क पे बैठूंगा, कोई तो पार्क कुछ जगह दे दो, किस तरह हम पब्लिक स्पेसेस में वापस जाएं। हाँ, किधर जाऊं मैं, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, मैं थक गया हूं, मैं घर से निकलूं किधर जाऊं, चाय ढाबा बैठ जाऊं। It's a millennial thing. I think we are the last generation who has seen what it was like to be outdoors, to playgrounds में खेलना वगैरह। अब I think Gen Z और उसके बाद जो onwards जो अब अल्फा चल रही है, I think 2010 के बाद, उनको तो आपने जू में बंद किया है, तो वो तो सारे बच्चे जू के अंदर पिंजरों के अंदर बंद हुए। बट I mean यार back in the day it was nice, you could go out there। चले उस वक्त तब भी there wasn't a lot to do, उस वक्त भी नहीं था, बट इससे तो बेहतर था ना, इससे बेहतर था। हम लोग खुद ही गली में वो पेप्सी का क्रेट लगा के क्रिकेट खेल ली, 10 और चीजें, कुछ फुटबॉल, स्ट्रीट फुटबॉल हो जाती थी। अब वो अभी भी कर रहे होते हैं लोग, बट बच्चे वो, हाँ, लेकिन that's the screens and phones की वजह से, उसकी वजह से चेंज हो गया। But generally I'm talking about it कि back in the day there were public spaces, parks होते थे, food streets होती थी, there's nothing left anymore। And I think it's with each passing day it's shrinking, और से और कम होता जा रहा है। Definitely, it's very sad। It's very sad। लेकिन सर, हाँ, I love the city, I actually do। I don't know why I love the city, but है, like you know, when you love a place you're gonna do something about it। और वो I think वो nostalgic value और उस सब की वजह से ही होता है, वरना अगर objectively आप देखें तो कोई इतनी खास है नहीं जो मानने वाली बात है। It used to be a beautiful place. It used to be one of the prettiest places in the world. Karachi. Yes, and I talk about this a lot. That Karachi was the place. Beautiful coastal beaches. But I think this was before we were born. No, this is before our Dadabus were born, right? इतनी पुरानी, हाँ, back in when the British were here and सब. यार आपका एक I think even till the 60s जो pictures देखते हैं, भी अक्सर Facebook वगैरह पे आ रही होती हैं कि beaches थे और आपकी सदर बाजार, एम्प्रेस मार्केट। गवादर देखा आपने? गवादर की beaches देखे? तस्वीरें देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं। बीच है, पहाड़ है, फिर ये वो है। दिस इज द सेम बेल्ट, यही कराची था। आइलैंड्स होते थे, बीचेस होते थे, अलग अलग जंगलात, ये वो। आपने घर हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, सब बहा दिया। अभी भी हम समंदर के ऊपर ही बैठे हैं, समंदर के ऊपर ही होता। सो दिस आई थिंक इट्स काइंड ऑफ you need hope. This is the only thing that keeps you alive. And you know, for somebody like me, I'm like, yeah, what if? Or if Karachi becomes that one place, everybody's like, yeah, Karachi जाना है, like you know, the it place. It's the it place. So Ibiza नहीं जाना, Karachi जाना है। अच्छा, आपका विजन ये है कि कराची को वो चीज बनाना है। Yeah. Good यार। मतलब why can't we do that? क्यों नहीं सर? इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो जाएगा। दुबई भी तो हो गया ना। दुबई भी हो गया। दुबई में क्या था, ये तो नहीं था कि बुर्ज खलीफा आएगा तो आर्टिस्ट आना स्टार्ट करेंगे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है। आप जगहें दो, आप थोड़ा सा स्टेट सपोर्ट दो, बंदा बहुत है, ये तो सर हम एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसको बल्कि गोल्ड माइन हो सकती थी, लेकिन उसको एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना दिए, जो 60% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 है। आपने मुझे एक बात बताई, 5 लाख बंदा जू गया था। ये 5 लाख बंदा, सोचे किसी शो पे जा रहा हो, कैल्विन हैरिस आ रहा है और वहाँ 5 लाख पाकिस्तानी खड़ा हो, ठीक है,
you have any idea the amount of economic activity that you can generate? Insane. और कितनी allied industries, like there will be food court there will hotels चलना start हो जाएंगे, taxis, food industry चल रही है, hospitality, service, airlines, all of that. There's so much things that are going to be happening. और artists sir आपके I think और art forms भी वही वाली बात आपकी कि वो एक जब चीज चलती है तो फिर सब उसके साथ सब उसके साथ। यार आप अभी रो रहे हो, पैसे नहीं है, कर्जा नहीं जा रहा, आप how do there is no vision for that ना। अब वो किस तरह कोई समझाए कि भाई आप देखो ना सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। क्या आप तेल निकालना स्टार्ट कर देंगे? आपके पास तेल है? नहीं है। आपके पास कोई टेक पार्क्स हैं? अभी टाइम लगेगा ना, नहीं है ना। 50 साल आपके पास 10 और चीजें नहीं है, तो आप उस पर जो इजी चीजें हैं आप कर सकते हो। आर्ट इज समथिंग दैट इज वेरी इनहेरेंट टू ह्यूमन बीइंग्स, वो निकाल सकते हैं आप उसको। और सर इस खित्ते का मैं तो समझता हूँ कि साउथ एशियंस हर खित्ते की एक वो होती है यूएसपी, लाइक जर्मन्स दे आर वेरी गुड विद टेक्नोलॉजी, द चाइनीज मैथ्स वगैरह के ऊपर। साउथ एशिया इस खित्ते ने क्या प्रोड्यूस किया है? हम रंगीन लोग हैं, हम आर्ट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं सर। कव्वाली इस लैंड की इजाद है, ठीक है। अगर आप इंडिया को देखें, हम उनके साथ की है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी हम बात भी कर रहे थे, 10,000 साल शायद इससे भी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। तो क्या यहाँ पे कलर्स हैं, होली, ठीक है, बसंत, ये इस खित्ते के ये इवेंट्स है ना। बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ होगी कि नहीं वो होली काफिर हो गए, चलो हम उसको छोड़ देते हैं यार, हमारे पास अपनी जमीन पे इतनी चीजें पड़ी हुई हैं। बसंत है आपकी, पटाखे वगैरह, ये इस तरह की चीजें, म्यूजिक, ये इवन डांस, कितने डांस फॉर्म्स इस खित्ते से इजाद हुए हैं। हर यहाँ कल्चर के अपने डांस फॉर्म्स हैं, उनकी आर्ट है, उनकी पोएट्री है, उनके खाने हैं। so much beauty in this country, and that I believe के that is what we are good at. ठीक है, आप नहीं मुकाबला कर सकते जर्मन्स के टेक्नोलॉजी में, हम गाड़ियाँ नहीं बना सकते। हाँ, आप नहीं मुकाबला कर सकते ये जो इतने एशियन रेसेस चाइनीज वगैरह हैं इनका मैथ्स में। हमारी यूएसपी ये है यार, ये है मतलब इसको अडॉप्ट कर दिया। अडॉप्ट करने के बजाय इसके खिलाफ एक पूरी एक फ्रंट शुरू हो गया कि ये गलत है, मैं ये गंद है, मैं लाहौर जाता हूँ, मैं अगर लाहौर जाता हूँ तो मैं किधर जाऊँगा? लेट्स से आई एम अ टूरिस्ट, आई एम कमिंग टू लाहौर, मैं किधर जाऊँगा सबसे पहले? फूड स्ट्रीट, बादशाही मस्जिद में खाना खा रहे होंगे, पेड़े वाली लस्सी, भज्जे के बाद पाए, ये वो। तो जब आपकी चीज है, जब आप मशहूर एक चीज के लिए हो कि आप खुशियां बांटने के लिए मशहूर हो, जब आपका पूरा मुल्क इस बात पे बना है कि हम खुशियां बांटते हैं, तो आप क्यों लड़ रहे हो? क्यों अपने आप से लड़ रहे हो? हाँ, और अपनी आइडेंटिटी से आई थिंक हम लोग अपने दुश्मन खुद सबसे बड़े यही इसी तरह ही है कि हम जो हमारी वही वाली बात है ना कि सर हम कंफ्यूज इतने हैं कि हम एक चीज जो हमारी वही वाली बात डांस है या म्यूजिक है डीएनए में, ठीक है, आप एक इंसान की फितरत में, और हम उसी को ही इतना वो कर दिया कि यार ये पता नहीं बुरा है, गंदा है, गुनाह है, ड्रामे है। तो हमें जब ये डरा के रखेंगे ना, जब हमें चकड़ के डरा के हमें फंसा के रखेंगे, तभी हमें कंट्रोल कर सकते हैं ना, वरना तो इनके हाथ नहीं आएंगे। राइट, इनके धंधे बंद हो जाएंगे, हमारी तो रूहें इन्होंने खत्म कर दी हैं, बट ये तो जरूरी होता है ना, हम तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हमें छोड़ो, हम नहीं रुक सकते, बस हो गई हमारी। गुड यार, नहीं सर, बड़ा मुझे खुशी हुई इस बात को सुन के। 1.5 घंटे से ऊपर तो चली गई आपकी पॉडकास्ट, जो आपने बोला था कि 30 मिनट की पॉडकास्ट होती है। बेनिफिट है, अच्छी वो मजा आया, वी हैड अ ग्रेट, आई हैड अ ग्रेट टाइम, और खुशी हुई है देखकर कि अभी भी ऐसे लोग बाकी हैं जो मुल्क के लिए कुछ सोच रहे हैं और अपने काम से ही कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, पूरी मूवमेंट। एंड patriotism isn't that you would die for your country, it's what you would do for your country. Yeah, that's what it is. I mean, मतलब मुझे ज़्यादा प्यार है, आपको ज़्यादा प्यार है। आप तो बोलते हो कि मैं फट जाऊंगा अपने मुल्क के लिए, तो आप फट के किसका फ़ायदा करोगे? Just work for your country. Do make sure that you're doing something good for the people around you. And सिर्फ उनको खाने खिलाने से या उनको 10 ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलने से या अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करने से फ़ायदा नहीं होने वाला। You need to create art and music because that is the only bastion of civilization that will stick around. Yeah. Sir, wish you all the best. I had a great conversation. बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट शो पे भी आएंगे। And मेरी दुआ है कि अगले जितनी भी आपने टाइम अपने सोचा हुआ है उसके अंदर you do succeed in creating movement. Thank you so much. बहुत मज़ा आया। Okay.